Good morning, students. Students, today we are going to start lesson number 11 of maths, that is measurement. For that, you have to keep open your textbook page number 59. Now, in measurement, first we are going to talk about length. हम क्या समझने वाले हैं? Length. Length यानी लंबाई. कोई भी चीज़ की जो लंबाई होती है, how to measure that length. Now see here. Have you seen your ruler? Scale जिसे आप कहते हो, ruler जिसे कहते हो. So, have you seen that? देखो, I am showing you this scale. Can you see? Yes, it is 0, 1, 2. It is starting from 0, 1, 2, 3. It is till 15. Now look at the blackboard. I have drawn the scale there. Okay, it is starting from 0. It is starting from 0. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. If I will give you some pencil, अगर मैंने आपको pencil दिया, and if I tell you कि what is the लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, इस पेंसिल का लेंथ कितना है, तो व्हाट यू विल से इंक्लूडिंग दिस. ओके, व्हाट यू विल से कि मैडम द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर. ओके, द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर. बट बाय चांस अगर ये लेंथ, इफ आई इंक्रीज द लेंथ, एंड इफ आई टेक द पेंसिल टिल हियर, so what you will say now, then it will be difficult for you because it is in between 3 and 4. So the important thing is there, from 0, 1, 2, 3, these all are known as centimeter. Okay, which is mentioned there in your ruler. And the line which is there in between, जो उसके बीच में जो छोटे छोटे lines है, वो कितने हैं? देखो मैं आपको बताती हूँ. 1, 2, 3, 4 एंड जब बिगर देन इनके कंपैरिजन में जो उससे बिगर लाइन है, दैट इज 5, देन 6, 7, 8, 9, 10. ओके, सो हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? दिस स्मॉल लाइन्स, टोटल 10 small lines are there. These 10 small lines are known as millimeters. Now look here, 1 centimeter. So in 1 centimeter, from 0 to 1 and 1 to 2. Okay, ये जो 0 से लेकर 1 तक और 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, in between this centimeter there are 10 millimeters. Okay, so see what is written here. Centimeters is written in short form as centimeter. हर जगह it is not possible for us. हर जगह हम पूरा सेंटीमीटर लिखना इतना मतलब इतना ज़रूरी नहीं है. We have short forms. We can use short forms. Okay, so centimeters is written in short form as cm and millimeters mm. Okay, m for milli and m for meter. Millimeter is written in short as mm. Okay, so look at the blackboard. What I have written there? 1 centimeter. In 1 centimeter total how many millimeters are there? 10 millimeters are there. Now what you have to do? You have to open page number 60. And 60 you have given exercise there. Measure the length of the line shown below and convert into millimeters. Now see, you have to measure. I have already measured here, but you have to measure it again. आपको अपनी बुक में फिर से measure करने का है. So the length, first figure का जो length है, that is 6 centimeter. And the figure which is the line which is given next, number 2 पे जो line है, the measure of that line is 7 centimeter. Now how to convert centimeter into millimeter? अभी मैंने आपको explain किया है कि that 1 centimeter, in 1 centimeter how many millimeters are there? In 1 centimeter there are 10 millimeters. तो 10 centimeter, so 6 centimeter में कितने millimeters होंगे? So for that you have to multiply 6 into 10. So what is the answer? 60. Like that only. In 7 centimeters, 7 into 10, that is 70 millimeters. Like this you have to solve this exercise not only in your work, in your textbook, but also in your notebook. What you have to do? Give this lesson number 11 measurement length. First topic is our length. Then draw this scale. If you want, you can draw this scale. Then write this: 1 centimeter is equals to 10 millimeter. Then centimeter, short form of centimeter and millimeter. Write like this as it is. Okay. Then you have to solve this exercise. Exercise: measure the length of the line shown below and convert into millimeters. And then this one, draw this. Then what you have to measure? The second exercise. Second exercise is measure the length of a line in centimeters and millimeters. Now this is not in a complete centimeter. ये पूरा सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मतलब दो
सेंटीमीटर के बीच में वो जाकर स्टॉप हो रहा है, तो like this you have to measure the length of the given line. So the first line is, it is complete 4 centimeter and 5 millimeter. The second line is 6 centimeter and 8 millimeter. Now like this what you have to do, measure and write. आपको length of a book, thickness of an eraser, length of a pencil, length of the edge of your notebook. notebook का जो edge रहता है, मतलब side जो उसकी line रहती है, जैसे ये जो हम बोलते हैं, this is the book. तो ये जो एज है इसके, ये जो एज है इसकी, ठीक है, ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है. ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू मेजर एंड राइट. ओके, नाउ लेट मी, सो समझ में आ गया ना आपको, ये लेंथ, ये इधर से यहाँ तक की जो आपकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ अ नोटबुक. नोटबुक में नहीं, मतलब जो छोटी बुक होती है ना, फॉर विच यू हैव मेड फॉर मैथ्स ना, लाइक दैट. देन लेंथ ऑफ अ टेबल, आपके घर में जो टेबल होगा उसकी लेंथ कितनी है, दैट दिस मेजर कैन वेरी. ये जो मेजर है, दिस आंसर कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. वाई? बिकॉज द लेंथ ऑफ द बुक, जिसके पास जितनी बड़ी बुक होंगी वो आप उसका मेजर लिखो. इरेजर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, स्मॉल इरेजर, सम में हैव स्मॉल, सम में हैव बिगर इरेजर. सो वॉट एवर. पेंसिल जो अगर आपने शार्प कर लिया हो और पेंसिल की हाइट कम हो गई होंगी, तो नेचुरली द लेंथ विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, तो आपके पास में जो है वो आप उससे मेजर करके यू कैन कंप्लीट दिस इन योर नोटबुक. यू कैन डू इट एज असाइनमेंट ऑल्सो. टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू सम असाइनमेंट्स बेस्ड on the chapter which I have taught before and now. Okay, so